Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here we are going to discuss an important question about nodes. As I have already uploaded a detailed video about nodes, its types, radial nodes, angular nodes, how we can determine the number of angular nodes and radial nodes in a particular orbital, in suborbit and orbit. There are certain formulas by which we can easily determine the number of nodes in orbital or suborbit or main energy level, which means orbit. So as it is the important topic of second chapter, atomic structure, so here we are going to discuss an important question by different methods which can be asked in different exams. So let's discuss the question. Which of the following suborbit, in question here is mentioned suborbit, not orbital, in suborbit have maximum number of angular nodes? So simple, the question is about the number of angular nodes in the suborbit. Note that there is suborbit, not main orbit or orbital, and the suborbit are 4f, 5f, 6f, and same in all. As you know, f is the suborbit which is composed of further 7 orbitals. And student, as I have already mentioned that every f orbital have 3 angular nodes, and the question is also about the number of angular node, because the value of L is azimuthal quantum number, and the value of L actually give us the number of angular nodes in each orbital. So as L is equal to 3 for each f orbital, and there are total how much? 7 orbitals in f suborbit. So it is the question of common sense that L is equal to 3 for f. It doesn't matter f belong to 4 shell, 5th shell, 6th shell, or 7th shell, but the value of for f is L. The value of azimuthal quantum number for f is L, which is 3, and there are total 7 orbitals. So 7 multiplied by 3 is equal to what? 21. It means there are total 21 total angular nodes in f. Now it doesn't matter the f belong to 4f, 5 shell, or 6 shell. So it means there are same number of angular nodes in every f. It doesn't matter it belong to 4th shell, 5th shell, or 6th shell. Now let's discuss the total number of nodes which can be calculated by the formula in the suborbit. So if it is 4 orbit, the f belong to 4th number shell, so the formula by which we can determine the total number of nodes in a particular suborbit is equal to n minus 1 and 2l plus 1. So n is 4, 4 minus 1, and 2 multiplied by L is 3 for f, 2 multiplied by 3 plus 1. So 3 into 7. So there are total 21 nodes, and 21, all of them are actually which? Angular nodes. So angular node तो सारों में क्या है? 21 है. एंगुलर नोड तो सारों में 21 है, लेकिन 4f में टोटल नोड्स भी 21 है. इट मीन देयर इज नो रेडियल नोड इन 4f. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, which of the following suborbit have zero radial node. ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किस सब ऑर्बिट में रेडियल नोड नहीं है. तो इसमें रेडियल नोड नहीं है क्योंकि देयर आर टोटल 21 नोड्स एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली angular nodes. Now let's calculate the total number of nodes for 5f and for 6f. 21, ये बात तो अंडरस्टूड है आपके लिए कि कोई भी f हो उसमें टोटल एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 21 होंगे. अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो वो फिर क्या होंगे? वो रेडियल नोड्स होंगे. सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5f, 6f. नाउ in 5f, total nodes in 5f, so the formula is n minus 1 and 2l plus 1. So as the principal quantum number is 5, so 5 minus 1 and 2 multiplied by 3 plus 1. So 5 minus 1 क्या है? 4 multiplied by 2 3s are 6 और the plus 1 7, 7 4s are 28. So there are total nodes in 5f are 28, and out of this 28, 21 are angular node. So the remaining 7 are radial nodes. Total are 28, but
in these 28 7 are which radial nodes एंड 21 ये तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि एफ कोई भी हो उसमें एंगुलर नोड्स कितने होंगे 21 बिकॉज एल इज इक्वल टू 3 फॉर ईच एफ ऑर्बिटल 7 3s are 21 सो द नोड्स अदर देन 21 आर एक्चुअली रेडियल नोड तो ये 7 क्या है रेडियल नोड्स है ये 7 क्या है रेडियल नोड्स नाउ आप ये नोट कर लें नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर व्हाट फॉर 6f सो 6f के लिए अगर हम टोटल नोड्स कैलकुलेट करेंगे n माइनस 1 2l प्लस 1 सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है 6 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 1 सो 6 माइनस 1 5 2 3s are 6 और the 1 7 7 5s are 35 so 35 are actually total nodes in which in 6f and out of these 35 21 are angular node so the remaining are actually radial nodes so ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है which of the following have maximum radial nodes तो रेडियल नोड किस में ज़्यादा है 6f में 35 से आप 21 माइनस कर ले तो क्या आएगा 9 और 5 14 आएगा ना 14 सो 14 इसमें क्या है रेडियल नोड्स है इससे पहले 5f में कितने थे 7 थे 4f में रेडियल नोड्स बिल्कुल क्या थे 0 थे 21 ऑल ऑफ देम आर एंगुलर नोड्स सो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किस सब ऑर्बिट में रेडियल नोड 0 है तो जवाब क्या होगा 4f किस सब ऑर्बिट में रेडियल नोड ज़्यादा है जवाब क्या आएगा 6f किस में एंगुलर नोड ज़्यादा है तो जवाब क्या आएगा सेम इन आर बिकॉज इन सारों में एंगुलर नोड्स कितने हैं 21 है सो अगर हमको मालूम है तो सिंपली अगर हमको रेडियल नोड एंगुलर नोड ये वगैरह मालूम है तो हम इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3D 4D 5D 6D कोई भी D सब ऑर्बिट है तो इसमें एंगुलर नोड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एज L इज इक्वल टू 2 फॉर ईच ऑर्बिटल सो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं D में 5 है सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो actually every d sub orbit have total 10 angular nodes जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी f सब ऑर्बिट हो उसमें एंगुलर नोड कितने होंगे 21 तो कोई भी d सब ऑर्बिट हो 3D हो 4D हो 5D हो 6D हो उसमें एंगुलर नोड्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10 तो अगर इससे ज़्यादा नोड्स आते हैं तो वो एक्चुअली एंगुलर नहीं होंगे वो फिर क्या होंगे वो फिर होंगे क्या रेडियल नोड्स होंगे लेट्स फॉर एग्जांपल 3D में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नोड्स फार्मूला इज सिंपल n माइनस 1 2l प्लस 1 सो 3 माइनस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 ये 2 और तो ये 5 तो टोटल क्या है 10 एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली एंगुलर नोड्स अगर हम ये फॉर एग्जांपल 4D में करते हैं तो 4D फार्मूला n माइनस 1 2l प्लस 1 सो 4 माइनस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 4 3 आएगा ये मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़र 4 और 1 5 तो टोटल क्या आएगी 15 एंड आउट ऑफ दिस 15 10 आर व्हाट एंगुलर नोड्स सो द रिमेनिंग 5 आर रेडियल नोड्स इस तरह आप टोटल नोड्स 5 के लिए कैलकुलेट कर दे इस तरह आप 6D के लिए कैलकुलेट कर ले तो एंगुलर नोड मैक्सिमम कितने होंगे 10 इससे अगर ज़्यादा नोड्स होंगे तो वो फिर क्या होंगे रेडियल नोड्स होंगे इसी तरह अगर हम P के लिए कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू क्या है L एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 और P में टोटल कितने क्या है ऑर्बिटल है 3 है तो each P सब ऑर्बिट हैव टोटल 3 एंगुलर नोड्स अगर उससे ज़्यादा है तो वे फिर क्या होंगे फॉर एग्जांपल लेट सपोज 2p 3p 4p 5p 6p और 7p एवरी p l इज इक्वल टू 1
and every p has how much orbital? 3 orbital. So 3 multiply by 1. So every p will have 3 एंगुलर नोड्स. अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो फिर क्या होंगे? रेडियल नोड्स होंगे. एंड द ओनली ऑर्बिटल विच हैव ज़ीरो नोड्स दैट इज 1s. क्योंकि टोटल नोड हम ऑर्बिटल के लिए किस तरह मालूम करते हैं? n-1. सो 1-1 is equal to 0. It mean in 1s there is no region in which the electron density becomes 0, because node is actually the region around the nucleus where the density of electron or electron density become 0. So by this method we can easily calculate the total number of nodes, angular nodes or radial nodes or maximum angular nodes in each p, each d, each f suborbit. Thank you. Allah Hafiz.